डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम 12.9 टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? After defining these two quantities, we will find the relation between electric field and the electric potential, and we will derive a relation between electric field is the negative gradient of electric potential. Here we will find a term which is called potential gradient. We will define it, and now here we will find another unit of electric uh, intensity, which is volt per meter. We will prove this. Volt per meter is equal to Newton per coulomb. And last topic will be the electric potential due to a point charge. We will find the derivation. हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से आगाज़ करते हैं। हम जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज when charge is moving from one point to the other in an electric field. This is called electric potential difference. What is the unit of electric potential difference? It is joule per coulomb, because we are defining it work done per unit charge. Unit of work is joule and unit of charge is coulomb, joule per coulomb, which is also called volt. So volt can be defined here. If 1 joule of work is done by 1 coulomb charge, then the potential difference be 1 volt. So now here we consider that if a charged particle is moving from negative to positive against the electric field as shown in the figure, this work done from A to B, WAB, on a unit charge is called electric potential difference. Now what is absolute electric potential difference? ये भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है, लेकिन वर्क डन ऑन ए चार्ज मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी to a particular point inside the field, electric field, is called absolute electric potential. Now we will find the relation between electric field and the electric potential, which is a topic that is electric field is the negative gradient of electric potential. We will derive the expression. Now consider the diagram as earlier. Positive and negative. Electric field is always directed from positive towards negative. Here Q is moving against the electric field by the applied force. This is applied force, and here in the downward direction, here is the electric force, F, electric force. So work is done against the electric field. This work done is given by WAB divided by Q naught. Now the work done WAB when charge is moving against the electric field is given by F, product of force and the displacement. This work done is the work done by the electric field. So electric force is downward, electric force is in the downward direction, and displacement is in the upward direction. D is in the upward direction and electric force is in the downward direction. So we can write this force as electric force, Fe, and angle between them is 180, so we get minus Fd. Now using the value of force, which can be found by the definition of electric field intensity, and putting this value in the above equation, we get minus Q naught Ed. Now put the value of WAB in equation 1, we get delta V. Cancelling these Q naught, we get delta V is equal to minus Ed, and finally we get the expression for electric field intensity. E is equal to negative of the potential difference. This D is the distance between two plates and distance between 2 points A and B and A. If the point A and B are very close to each other, that is infinitesimally small distance between them,
then D can be replaced with delta R, and we can write E is equal to minus del V by del R. This quantity del V by del R is the maximum rate of change of potential. With respect to the distance, it is called potential gradient. So delta V by delta R is called gradient, and electric field intensity now can be defined negative gradient of electric potential. Negative gradient of electric potential. The negative sign, this negative sign indicates that direction of E is always along the decreasing potential. It is always along the decreasing potential. So unit of electric field intensity, from this equation number 3 we can write delta V has unit of volt, and distance delta R is the distance meter. So volt per meter is the second unit of electric field intensity. जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिट हमने न्यूटन पर कूलम पहले ही पढ़ी है, और यहाँ पे हमने एक नई यूनिट डिफाइन किया वोल्ट पर मीटर। अगर ये दोनों यूनिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हैं तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और हम यहाँ इनको इक्वल प्रूव करेंगे कि 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। नाउ वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड volt per meter using the definition of volt. As we know the definition of potential, it is the work done per unit charge, and unit of work is joule, so we can write joule, and q naught as unit of coulomb, so joule per coulomb. So this can be written as joule per coulomb into meter. And now defining the unit of joule, as work done is given by equation W is equal to product of force and displacement, and unit of force is Newton, so we write joule as Newton into displacement or distance as meter, so Newton meter. For solving this equation we get Newton per coulomb, which is right hand side. अब हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। इसके लिए हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q कंसिडर करते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ मौजूद है। इस फील्ड के अंदर दो पॉइंट कंसिडर करते हैं A एंड B, और हमें B से A की तरफ चार्ज को मूव करना है। A और B बहुत स्मॉल डिस्टेंस इनके दरमियान, जिसे हम डेल्टा R से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर से लेके B तक का डिस्टेंस RB, जबकि सेंटर ऑफ द चार्ज से लेके A तक का डिस्टेंस RA, और A और B के दरमियान में मिड पॉइंट जो P है वहाँ से लेके इस तक का डिस्टेंस R होगा। तो हम किसी पॉइंट R पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं जो कि इक्वेशन 1 में गिवन। अब हम डायग्राम की मदद से डेल्टा R को फाइंड करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि RB टोटल डिस्टेंस है, उसमें से हम RA को अगर निकाल दें तो हमारे पास डेल्टा R आ जाएगा। यहाँ से हम RB की वैल्यू फाइंड करेंगे। R हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट पे लाई करता है, और इस मिड को फाइंड हम इस R की वैल्यू को हम मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, जो कि RA प्लस RB डिवाइड बाय 2 होगा। यहाँ पे हम RB की वैल्यू को फाइंड पुट कर लेंगे, जो कि अभी इस इक्वेशन में हमने फाइंड आउट की है। इससे हमारे पास एक R की वैल्यू आ जाएगी। हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, और स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये 3 टर्म्स न्यूमरेटर में आएंगी, पहली, दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, और डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे डेल्टा R का